Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Niper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. If you are preparing for GPAT Niper DI Pharmacist exam, then this video is going to be very important, knowledge oriented and useful for your preparation. So it's my request to you, please watch this video until end. My dear students, in this video we are going to see classification number 3, second part, that is adrenergic. Here we are going to see the classification of alpha blockers and beta blockers, so which are very important for your GPAT Niper DI Pharmacist exam. So it's my request to you, again please watch the video until end. So first we'll see the alpha adrenergic blocking drugs. So we have seen the classification of sympathomimetic drugs. Sympathomimetic means those drugs which can copy the actions of adrenaline noradrenaline, or sympathomimetic means those drugs which can produce the action which are similar to the actions produced by stimulation of adrenergic nerves. That is sympathomimetic. Now sympatholytic, okay, sympatholytics or adrenolytic or anti-adrenergic, adrenolytic, anti-adrenergic और sympatholytics. Mimetics मतलब कॉपी करने वाले, lytics मतलब ब्लॉक करने वाले. So sympathomimetic means those drugs which can copy the actions which are produced by noradrenaline. Sympatholytics means those drugs which blocks the actions of sympathetic nervous system. So what do you mean by sympatholytic? So there are two terms, sympathomimetic and sympatholytic. Sympathomimetics means those drugs which can copy the actions which are produced by stimulation of sympathetic nervous system. That means those drugs which have similar action like adrenaline, noradrenaline, they are known as sympathomimetic drugs. We have seen in the previous session. Now what do you mean by sympatholytic drug? Sympatholytic drugs means those drugs which blocks the actions of sympathetic nervous system. So sympatholytic means those drugs which will block the actions of noradrenaline and adrenaline, right? Now, okay, adrenolytic drugs or anti-adrenergic drugs or sympatholytic drugs. Okay, all these are the same terms. You know that your noradrenaline has a two receptors, alpha receptor and beta receptor. अगर उसके alpha receptor है, beta receptor है, दो receptor, तो alpha receptor का भी types होता है, सब types होता है, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3, beta receptor का तीन सब type होता है, beta 1, beta 2, beta 3, alpha का दो होता है, alpha 1, alpha 2. So these drugs they blocks the receptors. So those drugs which blocks the alpha receptors of noradrenaline drug are known as alpha adrenergic blocking drugs और अल्फा ब्लॉकर सिंपली. तो ये क्या करेंगे, सिर्फ अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे. सो अल्फा ब्लॉकर्स विल ओनली ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर, नॉट अ बीटा रिसेप्टर. सो अल्फा ब्लॉकर्स आर क्लासिफाइड इनटू मेन two types. So first type is nothing but the competitive antagonist. So competitive antagonist means what? Competitive antagonist, they are also known as equilibrium type drug, and non-competitive antagonists, they are known as a non-equilibrium type. So first is a non-competitive type or non-equilibrium type. So in that beta haloalkylamine derivative. तो ये beta haloalkylamine derivative कौन है? Phenoxybenzamine. Okay, it is a phenoxybenzamine. So it is a alpha blocker used in the treatment of blood pressure and beta haloalkylamine derivative कौन है? Phenoxybenzamine. क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. So it is a beta haloalkylamine derivative phenoxybenzamine. It is a alpha blocker. Now equilibrium type or competitive antagonist, it is a non-competitive antagonist to the alpha receptor. ये phenoxybenzamine क्या है? Non-competitive antagonist है, अभी competitive antagonist to the alpha adrenergic receptor. So in that you have different types. First one is nothing but the selective alpha blocker. Okay, selective alpha blocker like zosins, all the zosins like prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin and tamsulosin. तो यहाँ पे याद रखना है अल्फा ब्लॉकर्स क्या है, जोसिन्स एंड लोसिन. जोसिन मतलब क्या है, ZOSIN है. लोसिन मतलब क्या है, LOCIN, LOSIN. प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन एंड टैम्सोलोसिन, they are known as a selective alpha 1 blocker. Okay, they are used in the treatment of hypertension. This prazosin is a drug of choice in the scorpion sting. अगर बिच्छू ने काट लिया तो उसके ट्रीटमेंट में ड्रग होता है, ड्रग ऑफ चॉइस प्राजोसिन. तो गाना है ना, मुझे बिच्छू लड़ गया रे, मेरे पीछे पड़ गया रे. तो अगर बिच्छू लड़ गया है, अगर पीछे पड़ ही गया है तो प्राजोसिन लेने का, क्या लेने का, प्राजोसिन. तो बिच्छू लड़ गया, पीछे पड़ गया तो प्राजोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, राइट. नाउ टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, alfuzosin, tamsulosin. So remember
this tamsulosin is the drug used in the treatment of benign prostate hyperplasia. Tamsulosin क्या है? Drug of choice in the benign prostate hyperplasia. Okay, so all these drugs they are also used as antihypertensive drug and they are also used in the treatment of benign prostate hyperplasia. Remember, last selective alpha 1 blocker. Now selective alpha 2 blocker, that is nothing but the yohimbine. Selective alpha 2 blockers, that is nothing but the example is yohimbine. Yohimbine is the alkaloid obtained from Raulpia. Raulpia का जो प्लांट होते हैं वहां से आता है yohimbine. So it is a selective alpha 2 blocker or antagonist. Remember, now non-selective antagonist, that means they can block alpha 1 as well as alpha 2. सो नॉन सिलेक्टिव, जो सिलेक्टिव मतलब क्या कि वो सिर्फ अल्फा 1 को ही ब्लॉक करेंगे. सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर मतलब क्या, वो सिर्फ सिलेक्टिवली अल्फा 2 को ही ब्लॉक करेंगे. सो नॉन सिलेक्टिव में आता है आपका फर्स्ट अर्गोट अल्कोलॉइड्स, अर्गोटामाइन एंड अर्गोटॉक्सिन. अर्गोटामाइन अर्गोटॉक्सिन दे आर नोन एज अर्गोट अल्कोलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम अर्गोट प्लांट. सेकंड क्लास आता है आपका हाइड्रोजनेटेड अर्गोट अल्कोलॉइड्स. अभी हाइड्रोजनेटेड मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन रहेगा, डाइहाइड्रो ट्राइहाइड्रो, ठीक है. सो लाइक डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन, डाइहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन. सो अर्गोटामाइन अर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजनेटेड अर्गोट अल्कोलॉइड्स. देन इमिडाजोलिन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर. सो पेंटोलामाइन इज इमिडाजोलिन derivative which is a non-selective alpha blocker. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. So remember, pentolamine is a imidazoline derivative which is a non-selective alpha blocker. क्वेश्चन आ चुका है इसका. Now next one is a miscellaneous. So chlorpromazine. Chlorpromazine क्या है? It is nothing but the antipsychotic drug. Chlorpromazine क्या है? Antipsychotic phenothiazine derivative होता है chlorpromazine. Actually this is a phenothiazine derivative. ये एंटी-इमेटिक ड्रग होता है क्लोरप्रोमाजिन. क्लोरप्रोमाजिन एंटी-इमेटिक, इसके वाइड बहुत सारे एक्शन होते हैं, एंटीसाइकोटिक, एंटी-इमेटिक, एनेस्थेटिक, लॉट ऑफ एक्शन. दैट्स व्हाई क्लोरप्रोमाजिन इज नोन एज अ लार्ग एक्टिल. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. क्लोरप्रोमाजिन इज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग. इट इज हैविंग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी. इट इज आल्सो हैविंग अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी. इट इज आल्सो हैविंग एंटी-इमेटिक एक्टिविटी. तो एंटीसाइकोटिक, अल्फा ब्लॉकिंग, एंटी-इमेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका बहुत सारा एक्टिविटी है किसका, क्लोरप्रोमाजिन का. तो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, लार्ज एक्टिल. इसको बोलते हैं लार्ज एक्टिल. इट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग. रिमेंबर, सो अल्फा ब्लॉकर्स नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप में आता है आपको फिनोक्सीबेंजामाइन. कॉम्पिटिटिव टाइप में 3 क्लास आता है, सिलेक्टिव अल्फा 1, सिलेक्टिव अल्फा 2 एंड नॉन सिलेक्टिव. सिलेक्टिव अल्फा 1 में जोसिन्स एंड लोसिन, टैम्सुलोसिन एंड ऑल द जोसिन्स, ठीक है. अल्फा 2 में आता है, अल्फा 2 ब्लॉकर में आता है आपका योइम्बिन. नॉन सिलेक्टिव में अगेन डिफरेंट क्लासेस आते हैं, जैसे अर्गोट अल्कोलॉइड्स एंड हाइड्रोजनेटेड अर्गोट अल्कोलॉइड्स. देन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव पेंटोलामाइन एंड मिसलेनियस में आता है आपका क्लोरप्रोमाजिन. सो दिस इज अल्फा ब्लॉकर्स. दे विल ओनली ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर, अल्फा adrenergic receptor. Now we'll see the second known as a beta blockers. So beta receptor blocker. So those drug which blocks the beta receptor mediated actions. तो बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होता है, देखो बीटा 1 रिसेप्टर होता है आपके हार्ट में. सो बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड बीटा 1 इज देयर इन हार्ट एज वेल एज किडनी. तो बीटा 1 किडनी में भी होता है, हार्ट में भी होता है. दे आर नोन एज अ बीटा ब्लॉकर. सो दोज ड्रग व्हिच कैन selectively antagonize the actions of adrenergic beta receptors, they are known as the beta blockers. Okay, so beta blockers they are classified into 2 main classes. 2 main classes होते हैं. फर्स्ट वन इज सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. तो पहला क्लास होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. अभी नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या, दे कैन ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर एज वेल एज बीटा 2 रिसेप्टर. सो नॉन सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होते, ये हर किसी एक के नहीं होते, ये बहुत हरामी होते हैं. ये हरामी क्यों है कि किसी एक की कभी नहीं होंगे, वो 2 नाव में पैर रखते हैं. बीटा 1 में भी रखे, वो उसको भी ब्लॉक करेंगे, बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे. अगर आपको सिर्फ हाइपरटेंशन में यूज करना है इनका, तो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से जो एक्शंस मिलेंगे, दोज एक्शंस विल बी एडवर्स इफेक्ट. सो नॉन सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर होते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे. ओके, सो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ओके, तो पहले अपन नॉन सिलेक्टिव देख लिए. तो नॉन सिलेक्टिव बीटा blockers, that means they can block beta 1 as well as beta 2. They are further classified into 3 types. So first, without intrinsic sympathomimetic activity, ISA. So those drugs which are beta blocker without intrinsic sympathomimetic activity.
सो इसमें आता है प्रोप्रानोलॉल, सोटेलॉल एंड टिमोलॉल। सो प्रोप्रानोलॉल, सोटेलॉल, टिमोलॉल, यहाँ पे ये याद रखो एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या होता है? एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर। तो एस मतलब सोटेलॉल, टी मतलब टिमोलॉल, पी मतलब प्रोप्रानोलॉल। तो एसटीपी क्या है? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इसका एग्जांपल है पिंडोलॉल। पिंडोलॉल क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब ये अल्फा एगोनिस्ट भी एक्ट करता है। सो बीटा ब्लॉकर है लेकिन अल्फा एगोनिस्ट है। सो दैट्स व्हाई बीटा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज अ पिंडोलॉल। याद रखो क्वेश्चन आते हैं। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, तो ये labetalol, carvedilol. Labetalol, carvedilol, they are the non-selective beta blocker with additional alpha blocking activity. Remember, so second class of beta blocker is nothing but the cardioselective beta blocker. So cardioselective means what? So they will selectively block the beta 1 receptor present in the heart. जो आपका कार्डियक सेल होते हैं, हार्ट मसल होता है, वहां पे जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको ही ब्लॉक करेंगे सिलेक्टिवली। सो दे आर यूजफुल टू ट्रीट द हाइपरटेंशन मोर देन नॉन सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स याद रखो, क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर, 100% आ चुके हैं, इनके ऊपर भी आया है, इसके ऊपर। सो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, एसिटोपिटोल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिहोलॉल, नेबिहोलॉल, सेरिप्रोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, इस्मोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एसिटोपिटोलॉल, अटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल. So remember, cardioselective beta blockers, these are the drugs which are selectively block beta 1 receptor present in the heart. Out of these, remember, metoprolol is known as a prototype of cardioselective beta blocker. Metoprolol is known as a prototype. ये क्या है? प्रोटोटाइप होता है. So metoprolol is known as a prototype of cardioselective beta blocker. So you have to write down this. Okay. So you can make trick anything. ट्रिक बनाओ या फिर ऐसे भी याद रखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉन सिलेक्टिव याद रखो, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, एसिटोपिटोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, देन सेलिप्रोलॉल, नेबिओलॉल. These beta blockers are also classified according to their generation. कि फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, सेकंड जनरेशन कौन सा है, थर्ड जनरेशन. सो बीटा ब्लॉकर्स आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन. जो फर्स्ट जनरेशन होंगे वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले नॉन सिलेक्टिव, सेकंड जनरेशन वाले कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, थर्ड जनरेशन वाले क्या है? विथ एडिशनल एक्टिविटी. फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, दे आर नोन एज ओल्डर बीटा ब्लॉकर्स एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. ये क्या रहेंगे? नॉन सिलेक्टिव रहेंगे. सो प्रोप्रानोलॉल, टिमोलॉल, सोटेलॉल एंड पिंडोलॉल. STP square. STP again. STP standard testing procedure square. So propranolol, timolol, sotalol, pindolol, they are a non-selective older generation or first generation drug. Second generation में क्या आएगा आपका? Second generation drugs of beta blocker, they are nothing but the cardioselective beta blocker or beta 1 selective beta 1 blocker or cardioselective beta 1 blocker. That you have metoprolol, atenolol, acetopitolol, bisoprolol, ismolol. Now third generation beta blockers, they are known as a beta blockers with additional alpha blocking or vasodilator property. So in that you have labetalol, carvedilol, celiprolol, nebiholol, bitoxolol. So out of that, carvedilol and nebiholol, they have vasodilating property. Labetalol is nothing but the additional alpha blocking property. They are known as a third generation. तो देखो बीटा ब्लॉकर्स में फर्स्ट आता है आपका नॉन सिलेक्टिव में selective beta blockers without intrinsic sympathomatic activity. इसमें आएगा ESTP, propranolol, sotalol, timolol. With intrinsic activity में pindolol आता है and additional alpha blocking activity में labetalol आता है, carvedilol आता है. Cardioselective beta blocker में metoprolol, atenolol, acetopitolol, bisoprolol, ismolol, betaxolol, celiprolol, nebiholol. According to generation, ये वाले जो है ये विदाउट जो फर्स्ट जनरेशन है, they are known as a propranolol, timolol, sotalol, pindolol. तो out of that यहाँ पे आपको याद रखना है timolol is not used systemically, it is only used topically for the treatment of glaucoma. Timolol सिर्फ glaucoma में ही यूज किया जाता है, बाकी systemically यूज होते हैं. Timolol is used in the glaucoma topically. Okay, you can order this magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector Government Pharmacist exam preparation. Read 2-3 times before the exam and qualify 100% with very good rank in a short period.
You can see we have very much promising result from past few years, and you can also join our online GPAT Niper 2024-25 online course. Here you will have live lectures, recorded lectures, study material, online test series, everything is there in a 8000. The lectures will be subject wise and chapter wise. Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector, read twice and qualify 100.